think about how sixth house you have studied, like sixth house के बारे में क्या सोचा है, क्या पढ़ा है, and then think about how is Ashwini and just connect them. ये अलग रूप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनलॉफुल चीजें नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पे जो मदर है ऑफ ऑल इज थ्रू डिवोशन, थ्रू परसिवरेंस, थ्रू पोषण, थ्रू पुष्य. तो उत्तरा फल्गुनी वाला पार्ट को कृतिका चाहिए, मतलब द फर्स्ट टू पदर्स विल डिजायर फॉर कृतिका एंड द नेक्स्ट टू पदर्स विल डिजायर रोहिणी. सो अनुराधा नक्षत्र हमारा जब आता है तो आफ्टर विशाखा is the shaka. Simple. Is the shaka, is the branch. So what is the branch? It's actually this portion of this I think showed in the last slide. There is a point here, Zuben el Zunabi. That is the point where Vishakha lies, and the remaining portion will be of Anuradha now. So till here, I think this is Vishakha point, and after this to starting of these three stars will be Vishakha. Okay, so this is Scorpio, this is Antares, this is a main star of Jyeshtha actually. But इससे पहले ये जो तीन stars हैं, and then this whole region will be represented by Vishakha. So what does Vishakha represent? Vishakha represents actually, sorry, Vishakha nahi, Anuradha represent actually the divided part. कि अब division हो गया है. There is already always a two-dimensional things in Vishakha. Okay, there are two ayams to it. So the main star that represents is a crab. A crab is the first star of Scorpio, and I'm not able to read this name. Dishuba, something name like that. Okay. So that are the three stars of Anuradha. If you see the region, zodiac region, that will be 3 degree 20 minutes to 16 degree 40 minutes, Scorpio. 3 degrees 20 minutes to 16 degree 40 minutes is the region where this Anuradha lies. Nakshatra padas will be Leo, Virgo, Scorpio. Ruling planet is Saturn. Motivation is righteousness, dharma. Ayurvedic dosh is Pitta. Gana is Deva. Orientation is Triyangamukha, looking forward. Quality is Midru. Soft, tender. Caste is Shudra. Guna is Tamas. Shakti is Radhana Shakti. Power to worship. Yoni is of a female deer. Body part represented is breast, stomach, womb, and bowels. Activity is passive. Element is Agni. Direction is south. Color is of a orangish, brownish orange. And then there is a sound is na, ni, no, ne. Deity is Mitra. Symbology is again a triumphal arch. Bird is peacock. Animal is female deer. And the tree is Bakula Nagkesar. What does Shastra says about it? फिर बताएंगे. Radhana Shakti. मतलब? Radhana, power to worship. आराधना होता है ना. So Anuradha, rules men of prowess, heads of cooperation, friends and virtuous lover of assemblies, tourists, all honest person in the world and all things that grow in autumn. If a person born in Anuradha, he will be very affable in speech, opulent, easy loving, honorable, famous and powerful. Treatment of disease. Murti Chitta 26, one line. Treatment of disease. Par Horasara, person born in Anuradha Nakshatra will be fortunate, virtuous, kind. He will be troubled with the hunger and the thirst. He will wander in life and live in foreign places. As per Yavan Jatak, the person will be truthful, will be dedicated to the king or government work, motherland, music, mother. He will enjoy life and show interest in people of other sex. Okay. Give me 1 minute. Okay. So ये region है. This is the whole region of Anuradha. Okay. So let's see what all Shaktis will be there.
So this is the point of 6 degrees. 6 degrees 40 minutes. Okay. Sorry, 3 degrees 20 minutes. 16 degrees 40. Degree 20 minutes to 16 degree 40 minutes. So इस रेंज में क्या आएगा 11th हाउस में you will get उत्तरा फाल्गुनी till what degrees 10 degrees you will till 10 degrees you will get so 3 degrees 20 minutes से यहाँ तक and then next 3 degrees 640 so दो पदस किसके आएंगे उत्तरा फाल्गुनी के आएंगे ठीक है and then other 2 padas will come of which हस्ता। nakshatra हस्ता ओके अब इनकी शक्तियां देखो कि ये क्या है इससे समझ में आएगा ना कि what is the हाँ। prominently actually in the आराधना सॉरी अनुराधा ठीक है सो इसमें क्या आएगा इसमें आएगा मघा मघा लेकिन वो यहाँ पे फाल्गुनी। 3 पदस तक आएगा ना 13 डिग्रीज 20 मिनट तक हाँ। एंड द लास्ट पदा विल बी ऑफ फाल्गुनी ठीक है इधर क्या आएगा इधर मतलब 9 था उसमें कहा। हाँ 4 नंबर है नहीं। तो 2 तो अश्लेषा के आएंगे, सारे पुष्य आते। सारे पुष्य आएंगे ना देखो चेक करो 8th हाउस से क्या 16 आएगा 40 तक, हाँ हाँ सारे पुष्य आएंगे। 8th हाउस से क्या आएगा पहला पदा क्या कितने का होगा वी हैव मृक्षरा जो कि पहले पद में आएगा देन विल हैव आद्रा मतलब आद्रा नहीं है अनुराधा में ये समझ ये मतलब ये की है समझने वाली ठीक है इन टॉरस से कृतिका कहाँ से आएगा कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक रहेगा सो तो फर्स्ट टू अगले, पदार्थ विल बी हाँ, देखते तो कृतिका रोहिणी। गो इन रोहिणी ठीक है एंड देन यू विल हैव इन एरीज 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 10 डिग्री से लेकर 3 पदार्थ विल बी अश्विनी the last pada will be Bharani चलो बताओ हस्ता का क्या शक्ति है इसकी तो वो है, वॉट एवर यू डिजायर यू कैन गेट। हाँ हस्त क्षेपणी शक्ति हम्म। व्हाट इज फाल्गुनी फाल्गुनी का शक्ति क्या उत्तरा है फाल्गुनी इज वो नक्षत्र ऑफ रिपेयर, हर चीज 2 बार करनी पड़ती है। वो तो उसका मीनिंग है बट शक्ति क्या है द पावर टू ब्रिंग वेल्थ एंड accumulation टू यूनियन चयनी शक्ति है। चयनी शक्ति है क्या है इसका मतलब क्या है ये पावर टू अक्यूमुलेट वेल्थ थ्रू मैरिज। ठीक है तक क्या है तो लिब्रा भी कर ही लेते हैं लिब्रा में विल हैव 3 डिग्रीज 20 मिनट्स पे क्या होगा 3 डिग्रीज 20 मिनट्स से लेके एक पदा विल बी ऑफ चित्रा and the remaining 3 padas will be of Swati. Vishakha will start from 20 degrees. अब इसको देख के क्या समझ में आता है तुम लोग को बिकॉज आई हैव
इससे तुम्हारा सेंस क्या होता है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अश्विनी. Ashwini going in 6th house. What do you understand or maybe feel about anything? Any thoughts that comes in your mind? Think about how 6th house you have studied. Like 6th house के बारे में क्या सोचा है, क्या पढ़ा है, and then think about how is Ashwini and just connect them. Connect the two things. Health is a problem. Okay. अश्विनी का हीलिंग पावर 6th हाउस में जा रहा है. फिर फोकस एंड ड्राइव भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज अश्विनी इज वेरी स्विफ्ट मूविंग एंड फोकस्ड. वो भी चीज 6th हाउस में ट्रबल्ड होएगी. एंड 6th हाउस का अपना फ्लेवर इज टू मूव थिंग्स स्लोली. So first thing we can say is things will be slow in Anuradha. Simple है ना? और things won't be fast. सबको जल्दी जल्दी करने का नहीं है, सबको आराम आराम से करने का है. Whatever will, so whichever planet will go in Anuradha will be slow planet. ठीक है? It won't be fast. And you will also have some health related issues to that planet because of that planet. Because it is growing in that house. Right. Right? Or think, what about Bharni? Bharni going in 6th house. What can you say about? अगर भरनी छठे घर में चला गया है. तो अगेन डिजीजेस रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकते हैं. ऑल्सो यहाँ पे भी फिर वही चीज आएगी. दे लैक कंट्रोल. Lacking of control. और मतलब प्रिंसिपल्स में भी इशू आएगा. ठीक है. Diseases of sexual organs, sexual thing भी हो सकता है. ठीक है. Lack of control could also be a thing. Okay. And having problem with Yama. Having problem with Yama. You can say like na having problem with the Deva. Whichever Deva is there, you can have a problem with him, like. So Bharni represented what? Like having guards, having problem with guards, issues with the guards. Why? Because at the look 8th house में भी क्या है? आद्रा है ना, 3 पदा आद्रा का है. ठीक है. So एक तरफ अश्विनी भी है और आद्रा भी है. then they could also have problems with the law क्योंकि भरनी में जजेस भी आते हैं. Would be having something related. So Anuradha can represent something that does not correspond to law. क्योंकि आर्द्रा is also about right and wrong and finding that path between right and wrong. It could be like what is right, correct. And मृगशिरा भी जा रहा है 8th house में. तो मृगशिरा is the path, so then you do not know what is the right path to choose. Okay. Losing the path. What Shakti Adra did had? आद्रा के पास क्या शक्ति थी? इसके पास वो शक्ति नहीं है ना, मतलब ये समझो ना कि वो शक्ति नहीं है. तो आद्रा के पास क्या शक्ति है? यत्न शक्ति है. अचीविंग थिंग्स बाय हार्ड वर्क. शक्ति. तो हार्ड वर्क के बिना ही मिलेगी जो चीज मिलेगी है. फिर तो लॉलेसनेस दिख रहा है ना. फिर तो मतलब प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से आप मत चलो, धर्म के उस पे नहीं चलोगे. आपको क्विक वो चाहिए बिना यत्न किए. और इट कुड बी लाइक कि यहाँ पे इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि ये बिना यत्न के ही मिल जाए. हाँ. इट कुड आइदर वे ना, मतलब यत्न ना करना पड़े जिसके लिए वो भी मिल जाए. तो दैट इज इट कुड बी ऑल्सो रिलेटेड टू इनहेरिटेंस. Something that you don't have to do anything about it. You will just get it. Or it could be unlawful also, that you did not choose the right path. Not unlawful. 8th house is unearned money.
तो अनअर्न्ड इज दैट ऑल्सो ना. अब चोरी को ये तो नहीं बोल सकते कि चोर ने इतना हार्ड वर्क किया है, प्लानिंग करी है. तो चोरी करने में भी कुछ तो हार्ड वर्क किया, पर इनहेरिटेंस में तो कोई भी हार्ड वर्क नहीं होता. हाँ, इनहेरिटेंस में कोई हार्ड वर्क नहीं होता. जीरो हार्ड वर्क है. थीफ को फिर भी कुछ तो करना पड़ रहा है, दिमाग भी बिल्कुल, कुछ लगाना तो पड़ रहा है, रिस्क भी लेना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है. बट उस केस में आप वो नहीं हो रहे हो ना. उस केस में आपको भरनी से कोई लेना देना नहीं है. वो तो लीगली लॉफुली धर्म के उससे भी आपकी है इनहेरिटेंस. अधर्म से थोड़ी ले रहे हो इनहेरिटेंस, या तो इनहेरिटेंस अधर्म से ले रहे हो. Nice. You cannot be sure that sixth house burning is unlawful. Unlawful नहीं कह सकते ना, मतलब इसलिए कि लॉ का कुछ ना कुछ अलग सिस्टम है. देयर इज there are multiple things. One is कि आप वो बेसिक तो कॉन्सेप्ट हो गया ना कि आप वो धर्म के उस पे नहीं चल रहे हो. यमराज अभी से हम एक ही नक्षत्र जोड़ो, मतलब इफ यू ट्राई टू हाँ. सी वन इज यत्न शक्ति एंड यू आर ब्रिंगिंग भरनी पीर्ति, जस्ट कीप यत्न ओनली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दैट. ठीक है, अभी हमने भरनी का अलग देखा, इसका अलग देखते हैं. हो सकता है somebody having a prominent moon could have issues with भरनी side or something, और अभी सिर्फ आद्रा समझो कि यत्न शक्ति नहीं करना पड़ रहा. but I will this tell you why it won't be unlawful. I will tell you why it won't be unlawful, because you will have to see the ninth house, the software of it. Who is ruling this software? ये चला कौन रहा है? बट आर्द्रा का सिर्फ शक्ति तो नहीं है ना. फिर आर्द्रा में तो ये भी है कि मे बी दीज पीपल आर एक्सट्रीमली सोशल बिकॉज आर्द्रा इज सॉर्ट ऑफ एंटी सोशल. Antisocial, obviously. So this could be a very social thing. And obviously it is coming from Vishaka. It has to be social. Vishaka is social. It has to be social. तो वही जो लोग क्या कहेंगे, वो वाले लोग आगे. Look at what does ninth house says. What is Pushya? This is the mother ना. ये मतलब ये जननी है, ये पिता है, ऐसा कह लो, इसका सॉफ्टवेयर कह लो. तो इसका सॉफ्टवेयर क्या कहता है? पुष्या. एंड व्हाट इज पुष्या? Power of harnessing creative spiritual energy. इसी से जन्म ले रहा है, मतलब पावर ऑफ व्हाट, जो भी इंग्लिश में इतना बड़ा बड़ा बोला. अल्टीमेटली आई वुड से इज लाइक पोषण करने की शक्ति है फंडामेंटली. हाँ. हाँ. ठीक है, पोषण करने की शक्ति से ये जन्म आता है. दिस कम ब्रिंग गिव बर्थ टू राधना शक्ति, पावर टू वर्शिप. यत्न नहीं है और जल्दीबाजी भी नहीं है. ऐसा होता है क्या कि आज पूजा करो कल को सब कुछ हो जाएगा? नहीं. और पूजा करने में तुम कुछ करते हो, मतलब एक्चुअली कुछ करना होता है, लाइक यू डू एक्शन ओरिएंटेड, और इज इट समथिंग दैट इज इंटरनल, मोर ऑफ अ डिवोशन बेस्ड, मोर ऑफ अ प्रेम बेस्ड, मोर ऑफ अ इमोशन बेस्ड, कि उसमें है कि लेके कुछ काट रहे हैं, रेती चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ. There is two dimension, like you can say the always the puja part is said to be karm kand. It's not said like na bhakti is totally internal. So that is where this आराधना शक्ति is there. ठीक है, तो आराधना शक्ति वो इसलिए है क्योंकि यत्न शक्ति गई है. यत्न नहीं करना है, और बिना यत्न करे पा रहे हैं, क्योंकि पा तो रहे हैं ना, क्योंकि हस्तक्षेपी तो है. पावर टू पुट थिंग्स, डिजायर्ड थिंग इन योर हैंड्स. ये हस्तक्षेपनी शक्ति का एक अलग रूप है. ठीक है, ये अलग रूप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनलॉफुल चीजें नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पे जो मदर है ऑफ ऑल इज थ्रू डिवोशन, थ्रू परसिवरेंस, थ्रू पोषण, थ्रू पुष्य. एंड पुष्य इज नॉट अनलॉफुल. इट्स अ सैटर्न, मतलब सैटर्न ड्रिवन कह लो, या सैटर्न को दिया गया ये. इट्स कैन नॉट बी अनलॉफुल. इज द गुड पार्ट ऑफ द हस्त. अब जैसे मैं स्विच करूंगा तुम समझ जाओगे कि आहा अच्छा अब अनलॉफुल होगा. कैसे अनलॉफुल होगा? तुम थोड़ा सा इसको ट्वीक करो और जरा सा ज्येष्ठा बनाओ, और जैसे ही ज्येष्ठा बनाओगे यू विल सी द अदर टू पार्ट ऑफ द हस्त विल कम किक इन, एंड अश्लेषा विल किक इन हाँ. in the ninth house. And as soon as Ashlesha kicking, you know this is not gonna be straightforward things.
It will be crooked, it will be cruel, it will be not very oriented to the law. Now you understand. Okay, so abhi pushya is not very not of like cruel nature, ashlesha nature. It's through it's the mother's milk, it's the cow's milk, cow's udder that you are getting through. Okay, that is the mother, that is the actually father of this whole thing. So that is Anuradha for you. यत्न शक्ति नहीं है, जल्दी भी नहीं है, अश्विनी नहीं है. So it's अश्विनी नहीं होने की वजह से there is no directed aim. समझ रहे हो? Directed aim नहीं है. अश्विनी I always represented with the horse pads, like ना, looking nowhere else, no in other direction, only one goal, one orientation, just get to the point. That is not there. ठीक है. And कृतिका रोहिणी भी नहीं है. कृतिका एक तरफ, first two padas will be kritikas and the next two padas will be rohini. So first two padas ki desire is towards kritika and the next two padas ki desire is towards rohini. ठीक है. So already we know, we can see from Uttara Falguni. So Uttara Falguni wala part ko kritika chahiye, matlab the first two padas will desire for kritika and the next two padas will desire rohini. So hasta aaya hai, hasta shaped shakti, obviously there will be a material desire. And the first two padas is having a desire of union. First two padas has a desire of union. The next two padas is having a desire of an object. Rohini is the jewel, is the beautiful bride, is the beauty, is the Brahma, having the desire to become Brahma. Something like that. That is the second dimension. Okay. So Uttara Falguni Shakti, the nakshatra of the repair, Kelo, is giving birth, is the prominently in Anuradha, and that is also we saw कि यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं हो सकती ना, कि we always saw Virgo as a slow sign. We always saw Virgo as a like ना this things to redo, recorrect. ठीक है. So always, तो उत्तरा फल्गुनी इसलिए यहाँ पे कैसा है? उत्तरा फल्गुनी is to have that repair within you. ठीक है. So इसलिए जल्दीबाजी नहीं है. Tenth house, we have the last nakshatra is only Falguni and the first three padas is Magha only. First three padas we are having Magha. So it's always about, Magha is always about being ancestors, Kul, like na, Pitris and all those things. And Pitris and unka puja bhi is always a prominent theme of praying to your ancestors and all. Like हम लोग ने पढ़ा है. Clear है? So this gives us some picture of Anuradha, how Anuradha works and how Anuradha is the nakshatra of devotion. Is the nakshatra of devotion. More so, it's this also is about the devotion towards other person through union. It is very prominently seeking the union side, and because self nahi hai, kritika nahi hai, so the first two part will be always to seek for somebody who is independent person and want to get him or her to get complete. Okay, that kritika portion, and the next portion is driven towards rohini side.